Xavier Institute of Development Action and Studies was founded in the year 1995 by Dr. Father Michael Vanden Bogaert, S.J. It is a registered society run by the Jesuit of Madhya Pradesh province. It is a sister concern of Jesuit-run management institutes like XLRI Jamshedpur, XIM Bhubaneswar, XISS Ranchi, LIBA Chennai, and XBS Kolkata, and many other across the world. The institute offers 2-year full-time AICTE approved program since 2000, PGDM program with a specialization in rural management. XIDAS is driven by its vision and enduring passion for sustainable development. The cheapest rural management program with 2,67,000 fees for 2 years, 100% placement in the area of rural management, 4 field trips for the grassroots running. The academic activities and curriculum are drafted for the holistic development of the students. On successful completion of their studies, the outgoing students of PGDM-RM are absorbed in NGO, development agencies, government services, and many other commercial organizations. Now I would like to invite the Head of Department of Rural Management, Dr. Jogendra Pathak sir, to put some light and brief us about the webinar more. Welcome, sir. Good morning, dear all, present on the online and offline platform of today's webinar on job opportunity in rural development, agricultural extension. I am here to talk about the relevance of today's webinar. In today's scenario, rural development focuses on improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, whereas agricultural extension education helps in studying and solving the rural problem. Extension increases farm yields and improve the standard of living of farmers. As we heard from Mr. Ankit that agricultural extension can contribute within the two components of CRDP, namely agrarian transformation and land reform in terms of crop and livestock production. Extensionists can make significant contribution in rural development. The only purpose of agricultural extension is to disseminate information to raise the production and profitability of the farmers. The agricultural extension participatory approach often focuses on the expressed needs of farmer group and its goal in increasing production and an improved quality of life. Extension uses democratic methods in educating the farmers. It helps in adoption of innovations and in studying and solving the rural problem. It increases farm yields and improve the standard of living of farmers. It makes good communities better and progressive and contributes to national development program. Agricultural extension includes all activities of rural development and the scope of extension are increasing efficiency in agricultural production, increasing efficiency in marketing, distribution, and utilization of agricultural inputs and outputs. Conservation, development, and use of natural resources, proper farm and home management, better family living, in the rural areas. Though huge amount of developmental work have been done by the government
for the development of rural areas of our country since first 5-year plan, but still as we understand and talk that our rural areas lacks the component of sustainable development. There are ample amount of work that is to be done for the development of the rural areas of our country in a sustainable way, hand in hand along with the government. In true sense, our rural areas will only be developed when rural people recognizes and understands the need of development based on which they can shape their future. The development of rural areas will significantly give boost to the development of the entire nation as a whole. What rural development is facing today is the lack of professionals who can guide the rural people to the path of development as a facilitator. There are less work in business sector as compared to the rural sector, but professionals go hunting for jobs in those areas. But in our views, youth should also explore the area of rural development for job which is abundant. To highlight the example of professionals in rural development sector, we can talk about Mr. Anna Hazare of Ralegaon Siddhi, Maharashtra, who has developed 5 villages in India through agricultural cooperative model. Thus, it can be seen that working in the rural sector not only earns you money but gives you recognition as well. Eligibility and guidance are the hindrances that our youths are facing today for job. The study in the area of rural management after graduation can give you boost to the skill of the youth for getting jobs with many NGOs, corporate, government agencies working in the area of livelihood, education, corporate social responsibility, resettlement and rehabilitation, watershed management, climate change, biodiversity, natural resource management, health, and many other for the development of rural areas of our country. Or even you can become a social entrepreneur by developing an NGO and work for the rural sector. XIDAS can be one solution for rural management. Thank you. Thank you so much, sir, for the valuable information. Now I would like to invite Ms. Priyanshi Sharma to introduce our chief guest and keynote speaker of the day. Welcome, Priyanshi. Thank you, Ankit. Over 38 years of experience in agriculture and rural development, specialized in natural resource based rural livelihood with focus on promoting sustainable harvest of natural resins and gums. Dr. Moni Thomas is presently working as principal scientist in Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur. He is a BSc graduate from Jabalpur University in the year 1982. Completed MSc Agriculture Entomology from JNKVV Jabalpur in 1985. Done his PhD from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur in 1994. Done his PGDM-RM from Hyderabad in 2008. Completed MPD from IIM Lucknow in 2010. He has been accredited master trainer on LAG by ASCI and managing director of Jawahar RABI. He has been done his fellowships from DST, SERC and other from Madhya Pradesh Chief Minister Fellowship. He has guided 153 research papers, 10 concept papers, 4 books, 8 chapters, 347 citations and filed 8 patents among which one has been granted. He has been handling many projects among which some are JICA project maximization of soybean production in Madhya Pradesh, NWP on harvesting, processing and value addition of NRG. He has been awarded 4 national level award, 3 state level award and 2 Professor Society award. It would be a great honor, sir, to listen from you. The platform is all yours.
Thank you, Premji. Somebody can load my file. Before I make my presentation, is it audible? Is it audible? Little louder, sir. Okay. Is that okay right now? Can you hear me? Yes, it's okay. Okay. Thank you. I would like to acknowledge my gratitude to Dr. Dharam, Father Dharam Kishore sir, and Father Vinod Topper, Father Jerome, Dr. Uma, Father Sanjay Kujur, Dr. Yogenji, Antelji, and all the XIDAS faculty members as well as students who gave me an opportunity to make my presentation before you. Well, as you have heard from my background, I am basically an entomologist. But by way of my training and working experience, I moved more into agriculture development and rural development rather than focusing on entomology. Is that clear? Is that, I mean, it's audible? May I speak louder? Little, sir. Little Little more. more. Okay. I mean, okay. I have to raise my voice. Thank you so much, sir. Okay, welcome. Okay, welcome. Today I got this opportunity, or it is a job of sharing my experience. So this is an opportunity also to interact with youth and faculty members. Or it can be my skill set in rural development and agriculture extension that gave me an opportunity. So job and opportunity, they are dependent on your skill set. If you see this road, this is a road built by Government of India under the scheme Prime Minister Gramin Sadak Yojana. Basically, this road is constructed to connect people from urban area to rural area. This is again a roadmap where it is meant to attract entrepreneurs, graduates, and technical manpower towards rural area for the development. So here now it is in a way going to connect students or graduates who have done their BSc AG agriculture or from rural development institutions to go back to rural sector, and this road earlier which was not existing, but this road has meant to connect urban area to rural area. So now here all our graduates, especially from rural development and agriculture, have to go back to the rural area to create job and also find a job for themselves. Next, please. So development in rural sector will develop agriculture, or developing agriculture will develop rural sector. So rural sector and agriculture is so connected that it cannot be separated. A person who is a professional in rural development
should also know something about agriculture, or a person who is an agriculture engineer, agriculture scientist, he should know the components of rural development. It is not a thing which can be separated. So now, within the boundary of rural ecosystem, you have forest, you have agriculture, you have industry. So forest and agriculture, they are the two major land resource use. And secondly, agriculture and forestry are the two major areas where maximum Indians are employed or earn their livelihood. Again, here when we speak or concentrate on rural development, we cannot overlook forestry, we cannot overlook animal husbandry, we cannot overlook the fishery part over there. At the same time, we cannot overlook the infrastructure development taking place in rural areas. So here you have job as well as opportunities. Job means you find a job over there, suppose a rural development manager. But at the same time, a graduate has to find an opportunity, a bundle of opportunities which is available over there. So the opportunities in a rural area, particular rural area, cannot be dictated from one platform. It depends upon the ecosystem, the production system, the social components, the resources available, the distance from rural area. There are a complex of factors which create an opportunity for rural development or an opportunity to start an industry. For an example, a dry area, an arid zone, there you find crop production is not a viable option. So now what is going to be done? So you will find other options. What can be done over there? So the areas and opportunities vary from village to village or different agro ecosystem to different agro ecosystem. That only when we enter into a rural sector or into a rural village, a village, then only we will be able to find the opportunities lying over there and how to harness those opportunities for an entrepreneurship development or for a job creation or setting up an industry. Next, please. Yes, thank you. See, the India's gross value added GAV is 179, almost 180 lakh crore rupees. And if you see over there, from where this is coming out, the service sector, it accounts for 1,500 billion and it ranks 8th in the world in terms of economy. And within India, if you see, it ranks first in India, means service sector. And it accounts for around 54% of GAV. Second comes industry, which accounts for $561 billion. And in the world, it stands sixth, whereas in India, it stands second. The third one is agriculture. Indian agriculture sector is $376 billion worth, and it stands second in the world and third in India in terms of contribution. So these three sectors, if you see, service sectors are in rural area, majority. Then industries, all the industries, majority of the industries are in rural areas. Agriculture, of course, this is in rural areas. So see, if the three sectors are focused, if you see an opportunity here,
you will find most of the jobs lie here in these three sectors. So when you are a graduate, means if you see service sector, means sales, insurance, financial services, supply chain linkage, industry means these industries, processing industries, packaging industries, they need raw material. From where are these raw material coming to? So they have to be a supply chain. There has to be a resource. There has to be a resource. So these are all from rural areas. Agriculture, of course, there is no doubt. Its majority is from rural areas. Next, please. If you see the breakup of these three sectors, if you see the contribution of agriculture and fisheries is around 20%, 20%, 9%, and industries contribution share is around 25%, and the service industry share is around 54%. I just wanted to highlight what are the components of each industries where you can find out, where you can fit yourself, where you can find an opportunity. Next, please. This is a graphical representation of GDP sector-wise. And if you see, 6 of these subsectors are in rural areas. Agriculture, of course, mining, quarrying, manufacturing also. Construction, for construction, people from rural area migrate to urban area. So where are the resources? Human resources. Human resources, they migrate from rural area to urban area. And all the gitti, all the mud, all the muram, from where they are going? They are going from rural area to urban area for filling purpose. So, finance, real estate, with the expansion of this area, urban area, more and more rural area are being engulfed into urban setup. So if you see this graphical presentation, you see 6 of subsectors of service. They are in rural areas. So means you have huge opportunities in rural areas. Next, please. So I've cited an example of Indian horticulture market. This is the data of 1920. If you see the production of vegetables and fruits in India, it's worth $49 billion. Whereas if you see the export, it's just 1.54 billion. See the gap between production and export. It's not that we consume a lot. There are a lot of wastages, but here it's an opportunity. Why that export is not happening? The reason behind it, the production of fruits and vegetables, they are not of uniform grade. Here is you have an opportunity for contract farming, because an importer, they would like to have the fruit or vegetables of same size, same grade, and also of low pesticide residues, maybe organic also. So here, an intervention of an agriculture graduate or a rural development management graduate has an opportunity for entering into contract farming. Same is the case with floriculture. There is floriculture production. There is production of flowers. There is export of flowers. But see the amount of flower production. That's 3.171 billion, whereas the export is just 0.77 billion. Here is again an opportunity. So here, because these are high value crops, here grower or the farmer, they require quality input support, quality technical support, a supply chain, a market. So these are the areas where agriculture extension workers or a startup or a service provider or an IT solution provider can enter into this field. Next, please.
हम लोग सब बोलते हैं कि शहर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बट शहर और अर्बन एरिया दे आर नॉट डिक्टेटिंग द इकोनॉमी. द इकोनॉमी इज डिक्टेटेड बाय द रूरल पावर. हम लोग सब सोचते हैं कि जो परफ्यूम्स हैं या टैल्कम है या पेस्ट हैं या शैम्पूस हैं, ये सब हम ही लोग ज्यादा यूज करते हैं. बट इफ यू सी फ्रॉम दिस the data of sale in India, if you see fast moving consumer good items, 35 to 40% sales of major companies are from rural sector. And this was one of the reasons why the packaging of toothpaste, shampoo, soap, everything was shortened. Smaller packings were developed because they wanted to cater rural sector. Now, during December 2021, there was a decline of the sales of fast-moving consumer goods by 1.8%. There was a tremor. ये क्या हो गया? Now the companies now they are relying to reverse this slowdown, rural slowdown, on budgets, the budget announcement. Another what they are relying is direct transfer of 2.37 lakh crore, जो direct transfer किसानों के खाते में डालेंगे, वो ये 2.37 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए जब रूरल सेक्टर में इन्फ्यूज होगा, तो दे आर एक्सपेक्टिंग रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Another thing, they are expecting this MSP of wheat and rice that is going to be transferred. So they are expecting economic kickstart in rural area. The third one is 1,550,000 post office will be converted into core banking. इससे क्या होगा? लेन देन बढ़ जाएगा. तो रूरल इकोनॉमी जो है वहां पे इकोनॉमिक माइक्रो इकोसिस्टम में जब लेन देन बढ़ेगी तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. दिस वाज वन ऑफ द की रीजन व्हाई दिस पोस्ट ऑफिसेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोर बैंकिंग सिस्टम. एंड एट लास्ट, ड्यू टू गुड वेदर, we are expecting a good harvest season. So good harvest season is directly connected with purchasing power, improving the rural sale of fast moving consumer goods. देखिए, यदि आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं गांव में, तो जब पैसा आएगा उस पैसे से खरीदारी बढ़ेगी, और खरीदारी यदि रूरल एरिया में बढ़ेगी तो वहां पे रूरल डेवलपमेंट होगी. This is one of the reasons why most of the marriages they take place during बैसाख season. Harvest हुआ और घरों में शादियां होने लगी. शादियां होती हैं तो there is expenditure, spending of money, and then that spending of money, पैसा वहां शहर में गांव में घूमने लगता है. तो you see rural power, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का डिक्लाइन हुआ सेल, तो उसका असर इंडियन बजट पे आ गया. वहां पे पॉलिसीज बनने लगी. व्हाई? बिकॉज एज फादर धर्म किशोर साहब shared this view that around 68% of the Indian population lives in rural sector. हम 32% के लिए क्या बात करेंगे? तो हमारी जो पूरी फोकस है इकोनॉमी की वो 68% के लिए है. तो जब 68% के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, तो हमारे जो बच्चे हैं जिनको जॉब की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, एक नया उद्योग खड़ा करने की बात कर रहे हैं, वो शहर में कहाँ ढूंढ रहे हैं? यहाँ अपॉर्चुनिटी कहाँ है? यहाँ आपको यदि एक दुकान खरीदनी हो तो 5 लाख रुपए पकड़ी चाहिए.
आपको एक कमरा गांव में चाहिए है तो आपको 5,000 रुपए में कमरा मिल जाएगा पर मंथ। एक दुकान खोलनी है तो आप देखिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है शहर में, और वही इन्वेस्टमेंट यदि वही आइडिया लेके आप गांव में जाते हैं तो आप 1-2 लाख से आप शुरुआत कर सकते हैं। और गांव के लोग सपोर्टिव रहते हैं, आपके यदि अप्रोच अच्छी होगी दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। शहर के जैसे कंपटीशन नहीं है, वो समझने लगते हैं कि ये हमारे सेवा के लिए आए हैं, ये हमारी मदद के लिए आए हैं, तो वो आपको एक पैर रखने की जगह देते हैं। आप गांव में जाते हैं तो गांव में वो पानी के लिए पूछता है, वो खटिया डालता है और बिठाता है आपको, ये आपको शहर में नहीं मिलेगा। मतलब व्यक्ति की पहचान और व्यक्ति की इज्जत जितनी गांव में मिलती है वो शहर में नहीं मिलेगी। एक गांव में आप चले जाइए और पूरा घूम लीजिए, दूसरे दिन खबर आ जाएगी कि फलाना व्यक्ति आए थे और ये विकास की बात करके गए। आपकी पहचान बन गई 24 घंटे में। शहर में आप पूरा घूम जाइए, एक मोहल्ला घूम जाइए, आपको वो पहचान नहीं मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी है। अब इतनी अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी में आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। या तो आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आप जॉब देने वाले हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि हर गांव की परिस्थिति अलग अलग होती है, बिकॉज एवरी विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर विलेज। So you don't have a prescription for a particular village for a rural development and establishing a enterprise over there or looking for a job over there. So it depends. So every village has a different ecosystem, maybe socio-economic, maybe socio-political, maybe in terms of agro-ecology. आपको ये देखना पड़ेगा। यदि आप इतना देख सकते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद हम जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किए हैं, हम जिस एरिया में ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद हम शहर में ही रहना चाहते हैं। एग्रीकल्चर शहर में नहीं होता, रूरल डेवलपमेंट की व्यवस्था शहर में नहीं है। जब ये आपने अपना कोर्स को आइडेंटिफाई किया and then you invested 4 precious years of your life and then you are turning away from that, ये 4 साल आपको नहीं मिलने वाली वापस। और आप नए एरिया में जाएंगे तो you have to study from the base। यहां आपको सब कुछ मिल गया, but then we have to be serious कि ये मेरा एक करियर अपॉर्चुनिटी को हमको ध्यान में रख के चलना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज अभी 6 मार्च में इकोनॉमिक टाइम्स में निकला, इससे आप ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मिस्टर आर एस सोरी, he is the managing director of Amul, the Indian economy is based on 3 F's. Amul is an example worldwide. Small farmers, traders and workers, मतलब छोटे किसान, छोटा ट्रेडर और छोटा वर्कर। आपका फोकस है क्या? दूसरा, स्मॉल रिटेलर्स एंड स्मॉल मिडलमैन। आप यदि इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो ये बोलते हैं बिचौलियों को बंद करो। बिचौलियों कैनॉट बी देयर, कैनॉट बी रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। आप बड़े बिजनेस में आप बोलते हैं कमीशन एजेंट है, कमीशन देना है, मगर आप गांव में कोई एक कमीशन एजेंट बन जाता है, ये मिडिलमैन बन जाते हैं, तो आप बोलते हो कि यार वो कमीशन एजेंट है। भाई यू डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी, यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन ओवरकम दिस मिडिलमैन या कमीशन। डायरेक्ट आप सप्लाई चेन से लिंक करिए ना, मार्केट लिंकेज करिए, तो ये मिडिलमैन हट जाएगा, या मिडिलमैन कॉम्पिटिटिव रेट्स में खरीदने शुरू कर देगा। बट इन अ ट्रेड यू कैन नॉट इरेज द सेक्शन ऑफ मिडिलमैन और अ कमीशन एजेंट।
So you have to take it into consideration. That person will be there in the system. Create an opportunity where the middleman or the commission agent will work in a competitive manner. So small farmers की बात इसलिए है 85% of this farming community in India are small and marginal farmers. 2 एकड़ 1 एकड़ वाले या 1 एकड़ से कम वाले किसान. वो जमाना गया जब हम लोग बड़े फार्मर्स की बात करते थे. ये स्मॉल फार्मर्स का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास छोटा खेत है. तो छोटा खेत से उनको प्रोडक्शन करना ही करना है, नहीं तो वो अपना घर नहीं चला पाएंगे. मीन्स इट्स नॉट द आउटपुट, इट्स ऑल्सो द इनपुट. यदि वो 1 एकड़ का खेती कर रहा है तो वो एक गांव में 2 बड़े किसान हैं और एक गांव में 61 छोटे किसान हैं. तो ये जो 61 छोटे किसान हैं ये यूरिया लेंगे, डीएपी लेंगे, ट्रैक्टर चलवाएंगे. उनके पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो ट्रैक्टर हायरिंग पे लेंगे. तो यहाँ पे हायरिंग वाली बिजनेस आ गया. यहाँ पे आपका इनपुट कलेक्टिवली आप देखेंगे तो जो 61 किसान का जो इन्वेस्टमेंट था वो जो 2 किसान के इन्वेस्टमेंट, बड़े किसानों के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाता है. बट वी ऑलवेज लुक फॉर द बिग फार्मर. बड़ा किसान है, बड़ा किसान क्या करता है, वो पूरा खेती कर ही नहीं पाता क्योंकि उसके ज्यादा सारे बच्चे जो हैं वो शहर में पढ़ रहे हैं. तो हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर दैट बड़े फार्मर्स लैंड? तो व्हाट इज डूइंग इज अधिया पे दे दिया, लीज पे दे दिया. तो हु इज डूइंग द लीज? स्मॉल फार्मर्स. So small farmers are very important. And next one. Sorry, can you take the previous slide, please? No. Next one. Next one, please. Yes. See, another one is the Finance Industry Development Council on 6th of March appealed to RBI. What? Consider financing 2-wheelers in rural areas under priority sector. Why 2-wheelers? Because in villages, rural areas, 2-wheelers are very popular and most affordable mode of transportation. So rural market, it has a strong consumer base of 740 million consumers. अब आप ये बताइए 740 strong million consumer base है, तो यहाँ को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करेगी ना. तो ये कंज्यूमर बेस को हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेजुएट्स क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? एंड अमंग दिस 30% of them own 2-wheelers. So the sale of 2-wheelers in 2019 was 21.2 million units, and the projection is it will be just 26.6 million units in 2025. इसका मतलब क्या है? जो compound annual growth rate है, that is going to come down to 2.6%. इसमें इंडस्ट्री को परेशानी हो रही है कि 2-wheeler इंडस्ट्री जो है उनका सेल कम होने वाली है. So they are now insisting government of India to have a policy where 2-wheeler financing should be placed under priority sector. अब आप देखिए यहाँ पे कैसे आएगा. So how rural sector is important. So this is two development. Third one, next please. The 4-wheeler giant Tata Motors, they have launched a program called Anubhav, means a showroom on wheels. उन्होंने बोला हमारी 4 चक्के गाड़ियां को गांव में ही बेचना है. शहर में बिक्री कम है क्योंकि शहर में गाड़ी रखने की पार्किंग के लिए स्पेसेस नहीं है. एक घर में 2 गाड़ियां हैं, तीसरी गाड़ी रखने की जगह नहीं है. मगर यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस है 740 बिलियन यूजर्स यहाँ पे. तो what are they doing is a showroom on wheels for its rural marketing strategy. They are going to have 100 mobile showroom across the country.
अभी तक आपने डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में सुना था, अब देखिए डोर स्टेप कार बाइंग एक्सपीरियंस रूरल एरिया में ला रहे हैं। सी द इम्पोर्टेंस। और ये कारें खरीद के कैसी जाएगी जब गांव में पैसा आएगा। गांव में पैसा कैसे आएगा? गांव में एंटरप्राइजेस आप एस्टेब्लिश करेंगे, गांव में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो पैसा आएगा। तब ये टाटा वहां कर रही है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में आ जाते हैं। ये जो सर्विस सेक्टर है इसको टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, या दिस इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इसमें इंश्योरेंस है, टूरिज्म है, बैंकिंग है, रिटेल है, एजुकेशन है, सोशल सर्विसेज है, एंड दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 60% टू इंडिया जीडीपी। अब यहाँ पे बोलेगा कि if you say what is my role over here? See, insurance, you have crop insurance, you have annual insurance. When you install or establish a processing unit that has to be insured, ये insurance कौन करेगा? So you need a person who can provide a solution, IT solution. इंश्योरेंस के लिए फॉर्मेटिंग भरने के लिए, गाय के इंश्योरेंस, जमीन के इंश्योरेंस, क्रॉप की इंश्योरेंस, एंड अभी जितनी भी इंश्योरेंस हो रही है दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग इन रूरल अर्बन एरिया। रूरल एरिया में ये इंश्योरेंस का तो चीज चली नहीं। आप सबके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होगा, बट दिस मेडिकल इंश्योरेंस इज नॉट देयर इन द विलेज। गांव में किसी के पास मेडिकल इंश्योरेंस बहुत कम लोगों के पास, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। फिर आपकी एजुकेशन की बात आती है। एनीबॉडी विथ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल टू एस्टैब्लिश अ रूरल ITI, अ रूरल डिप्लोमा सेंटर, अ ट्रेनिंग सेंटर, ये सारी चीजों को करने के लिए यू हैव दिस एरिया वेयर द सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड। ये SBI ने एक स्लोगन डाला था, कीप पेस विद द टाइम्स। आपको अपने आप को यू हैव टू पेस विद द टाइम। समय बदल रहा है। इफ यू ग्रेजुएट, इफ यू वोंट कीप द पेस विद द चेंजिंग सिनेरियो, यू विल मिस द बस। नेक्स्ट प्लीज। ये सब सेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिया था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट जस्ट आई वांटेड टू शो यू द वॉल्यूम कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एंड व्हाट इज द साइज ऑफ इट। नेक्स्ट प्लीज। इफ यू सी ओवर हियर, I am focusing only on 3 sectors: agriculture and allied, manufacturing industry, service industry. These are the areas where you have lot of opportunities, where employment generation can be done, where you have a job opportunity. See, in terms of volume of economy, service sector stands first. But in terms of employment, it is second. Manufacturing industry, in terms of GDP, it is second. But in terms of employment, it is third. In terms of GDP, agriculture it stands third. But it stands first in terms of employment. Around 53%. यहाँ पे आपको देखना है कि एग्रीकल्चर लेबर्स और फार्मर्स, दे हैव नॉलेज, दे हैव द स्किल, ओनली वी हैव टू हार्नेस इट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट प्लीज। वेल, दिस इज टोटली फॉर आवर यूथ्स। दिस इज सेंसेक्स ऑफ 2011। यदि हम लोग देखेंगे 2011 में
the age group between 5 to 9 was around in thousands. It was around 1,27,401,000 population. It contributed 10.5%. मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा. और उसके बाद the age group 10 to 14, it was around 1,33,000, and that contributed 11%. तो यदि आप 5 to 14 years का आप टोटल देखेंगे, आप 21% यूथ जो 2011 में था. आज का देखते हैं. नेक्स्ट प्लीज. यदि ये एमपी में देखेंगे, मध्य प्रदेश में यही सिनेरियो देखेंगे तो इट्स अराउंड 22.5%. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज इम्पोर्टेंट. जो लोग those who have completed their 11th today were in the age bracket of 5 to 10 when during 2011. So today they may be around at the in the age bracket of 18 or 19 2022. और जो बच्चे 2011 में 11 से 15 के एज के में थे, आज के दिन वो 20 से 24 के एज ब्रैकेट में आ गए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आप देखिए 2036 में आप एज ब्रैकेट में, आज के जो आपका एज ब्रैकेट है 19 से लेके 24 के एज ब्रैकेट वाले, वो 30 से लेके 39 के एज ब्रैकेट में आ जाएंगे 2036 में. 2036 में आप लोगों की एक पारिवारिक जवाबदारी बढ़ने वाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल बी गेटिंग मैरिड. बच्चे होंगे, बच्चों को पैसा चाहिए. ये एज देखिए आप. हैव यू एवर फोकस्ड फॉर 2036? द प्रॉब्लम विथ मेजॉरिटी ऑफ आवर यूथ, दे डोंट सेट अ टारगेट कि 10 साल में मुझे कहाँ खड़ा होगा और मेरी उम्र 10 साल के बाद क्या होगी, 10 साल में मेरी प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है. तो स्टूडेंट्स, दे डोंट रियलाइज दिस थिंग. दे डोंट फिक्स अ टारगेट फॉर देमसेल्व्स. So 2036 is going to be crucial for you. Are you prepared for 2036? When you are going to be somewhere around 40 years of age, peak period. If you start thinking after 40 years of your age, so you will be missing lot of opportunities. Right now, when you are in the age of 19 to 24, you have a leverage. You can take risks. एक एंटरप्रेन्योरशिप में हमने कोशिश की, उसमें फेल हो गए, तो यू कैन टेक अ चांस. एक बार हम कोशिश कर सकते हैं. बट एट दिस एज, जब आपका कॉम्पिटिटर्स जो है टोटल वर्ल्ड में, इंडिया में, दैट इज गोइंग टू बी 21% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन एट दैट टाइम. तो हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्पीट विद दोस पीपल? तो हमें रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में जब फोकस करेंगे, यू हैव टू सी वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू आर गोइंग टू बी आफ्टर 2036 in India, in your location, in your rural area, in your family. Just think of it. Next, please. सबने यहाँ पे जॉब की बात की. ये my focus was to show you the canvas of Indian rural economy कि वहाँ opportunities क्या है. उस opportunities में आप अपना को कहाँ फिट करते हैं.
सब जॉब की बात करते हैं, तो जॉब कौन देगा आपको? यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव ए स्किल सेट. If you don't have a skill set, if you don't have an experience, so who is going to give you a job? So what is job? It is a paid position in any organization or unit. भाई हम तो उसी को रखें, हम अपने ट्रैक्टर ड्राइवर को हम देखते हैं कि वो ट्रैक्टर ठीक से नहीं चलाता, हम उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वाला हमेशा ट्रैक्टर जब चलाता है तो उसको नजर पीछे रहता है, ट्रैक्टर के पीछे खेत में जब चलाता है. यदि वो ट्रैक्टर को आगे देके चलाता है तो ही डजंट हैव दैट स्किल. हम ट्रैक्टर चलाने वाले को भी देखते हैं, हम अपने ड्राइवर से भी देखते हैं कि वो स्किल है कि नहीं उसके पास. यदि गाड़ी बीच में खड़ी हो जाए, कम से कम वो पाना माना लेके खड़ा तो हो जाए. तो हम अपने ड्राइवर को नहीं देखते हैं, वो स्किल नहीं है तो हम अलग कर देते हैं. तो आपको कौन रखेगा जब आपके पास एक स्किल सेट नहीं है? तो अनस्किल्ड लेबर, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बस काम करता है और घर चले आता है. उसके बाद लंबी एक लेबर होगा, ये एक मिस्त्री होगा, मिस्त्री की दुकान में हेल्पर के रूप में काम कर रहा है. मगर आप देखेंगे, आप आगे बताऊंगा आपको, सेमी स्किल्ड जो होता है वो पार्शली उसके पास स्किल होता है, एक छोटा बड़ा ट्रेनिंग कर लेता है वो, और उसके बाद एक नया स्किल आ जाता है. तो वो जो स्किल है वो या तो काम करते करते उसके पास आ जाता है. तो लेबर जो है धीरे धीरे वो मिस्त्री बन जाता है, आपने देखा होगा. तो वो क्या है, उसने अपना आप को अपग्रेड किया, मतलब उसने एक स्किल सेट लाया अपने आप में. तो वो जो लेबर था अब वो मिस्त्री बन गया, तो मतलब उसका डेली वेज बढ़ गया. उसका जो वेज था पहले 200 रुपए मिलता था, अब वो मिस्त्री बन गया तो मिस्त्री से उसको 500 रुपए मिलने लगा. वो उसने अपना स्किल सेट इंप्रूव कर लिया. मगर हम लोग अपना स्किल सेट इंप्रूव नहीं कर रहे हैं. अभी आप देखिए, आप क्या देख रहे होंगे कि वो जो केटरिंग में वो जो सर्व करने वाला है, वो कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि उसने अपनी एक दुकान खोली. क्यों? उससे पूछते यार तुम तो फलाने केटरिंग सर्विस में थे. बोला नहीं साहब, अब मैंने अपनी दुकान खोली. क्यों? उसने स्किल सेट सीख ली, उसने वहां पे पकाना सर्व करना सीख गया, उसने अपनी दुकान खोली. तो पहले क्या था, वो अनस्किल्ड था, वो सेमी स्किल्ड बन गया. जिसमें भावना थी उसने कर ली. अब पहले वो नौकर था, अब वो नौकरी दे रहा है, उसके साथ 2 बर्तन धोने वाले भी लग गए. तो नाउ दैट पर्सन हु वाज अनस्किल्ड, नाउ ही इज अ सेमी स्किल्ड, ही इज द जॉब क्रिएटर, ही इज अ जॉब प्रोवाइडर. See how that transformation is taking, and this is happening in our ecosystem. हमारे घरों में हो रहा है. और स्किल्ड वन वो सेल्समैन है, फ्लाइट अटेंडेंट, मेसन, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब सेमी स्किल्ड. अब आप देखिए, आप इनको देखिए, आपको देखिए, आप पढ़े लिखे, आपने 4 साल की ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, एंड देन यू डोंट हैव स्किल. तो नौकरी चाहिए है, नौकरी देना भी है, तो यू हैव टू हैव another set of skills in an area where you are going to search for a job, or in an area where you are going to create a job. यदि मेरे पास ये स्किल सेट नहीं होता तो मुझे तो फादर धर्मराज किशोर साहब बुलाते नहीं. मैं तो एंटोमोलॉजी का हूं ना, मैं तो कीड़ा मकोड़ा को कंट्रोल करने की बात करता हूं. बट मैंने अपने आप को एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट की बारीकियां समझने की कोशिश की, तो मेरे पास एक स्किल सेट आ गया. मुझे कुछ चीजों को समझाने का तरीका मैंने सीख ली, तो इसलिए XIDAS ने आज मुझे बुलाया, तो मुझे एक जॉब दे दी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी. यदि ये नहीं होता तो मुझे ना आप जॉब देते, मतलब जॉब मीन एक असाइनमेंट, या ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते आप मुझे इतने सारे बच्चों से बात करने का. तो आपको अपना स्किल रेगुलरली डेवलप करना. आप देखिए, पायलट जो होते हैं उनका ट्रेनिंग रेगुलर होता रहता है, क्योंकि उनका स्किल अपग्रेड करते हैं.
तो आप लोगों को भी अपना स्किल को अपडेट करना है। आपका स्किल सेट जितनी ज्यादा होंगे उतना अच्छा होगा, उतना जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी, या उतना आप सक्सेसफुल होंगे इस कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम में जहां पे 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी देयर, जिसमें आप एक कंकड़ के जैसे ही होंगे। नेक्स्ट प्लीज। यहीं पे आती है बात, आप अपना आप को पोजीशन कहाँ रखते हैं? जॉब हंटर के रूप में। देखिए गवर्नमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सुकड़ते जा रही है, श्रिंक हो रही है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ। बहुत सारे बच्चे हैं फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, इतनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज देम, बट आई एम टेलिंग यू दैट इतने बच्चे बैठते हैं, तो वहां पे जॉब कहाँ है? ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पास एक टेक्निकल स्किल सेट है, तो यू आर ट्राइंग टू गेट है, रिस्क लेने के लिए बैठे हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, आपका एक एम है, एक टारगेट है, आपके पास एक दिमाग में एक आइडिया है, तो उस आइडिया के बेसिस पे आप काम करने की सोच रहे हैं, तो आप स्टार्टअप हो गए। आप एक इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, छोटे सा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, छोटा सा लेवल पे करने जा रहे हैं, 10 किसानों के साथ आप एक ट्रायल करते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस आपको रिलायंस को बेचना है। रिलायंस ने बोला है कि हमको आप ऑर्गेनिक टमाटो दीजिए, टमाटो का साइज इतना होना चाहिए, और यदि भिंडी है तो भिंडी की लेंथ इतनी होनी चाहिए। तो जो परचेसर है उसके डिमांड के अनुरूप आपने वैरायटी ढूंढी, किसान को ढूंढा, उसका एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस थी, उससे उत्पादन लिया, उसको कैश पेमेंट दिया, आपने अपने सप्लायर को दी। तो आपने क्या किया? आप एक एंटरप्रेन्योर हो गए, आप एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से यू आर गेटिंग योर बेनिफिट, बट यू आर क्रिएटिंग ए जॉब एंड अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरिया फॉर अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, एंड the produce which is going to the consumers, that is of hygienic, better quality, and somebody else are also engaged. So there is a business. रिलायंस ट्रस्ट में 4 लोग लगे हैं, तो उनको भी नौकरी लगी, वहां पे गार्ड है, वहां पे 4 लोग हैं। यहाँ से एक ट्रांसपोर्ट, आपका एक छोटा सा ऑटो रिक्शा में यहाँ से सामान भर के वहां जाता है, तो आपने ऑटो वाले को भी एंगेज कर दिया। तो ऑटो वाला कहीं पे पेट्रोल खरीद रहा होगा, तो वहां से वो पैसा आ रहा है, तो वहां पे एक इकोनॉमी चल रहा है। तो हर लेवल पे एक एक इकोनॉमी चल रही है। ये सब करना है यदि आपको, तो आपको अपने एरिया में सर्वे करना पड़ेगा, वहां पे अपॉर्चुनिटीज क्या है उसके लिए लर्न करना पड़ेगा, और फिर यदि आपको किसी से कंसल्ट करना है तो यू हैव टू कंसल्ट। सो थिंक ऑफ योरसेल्फ in context to your education, training, in context to your approach to a system, in context to your current age and future prospects, हम क्या करना चाह रहे हैं। एंड फाइनली जॉब हंटर हो कि जॉब क्रिएटर हो, हम क्या बोलते हैं, वो नौकरी कर रहा है, दूसरा क्या बोलते हैं, उसने 10 लोगों को नौकरी दिया है। So you have to see where are you going to be position yourself. But another 10 minutes hardly. Next please. अब देखिए opportunities in ढूंढना है, आप कहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, आप संभावनाएं कहाँ है, वो संभावनाएं गांव में दी जाएंगे। तो किसान के जरूरत क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, किसान क्या चाहिए उसको, और फिर यदि उन चाहतों को करके वो उत्पादन करता है तो एक प्रोड्यूस आता है। तो अपॉर्चुनिटी नीड में है और उसके प्रोड्यूसर्स में है। नीड कैसा है, वो एक उत्पादन करना चाह रहा है, तो ही नीड्स टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए। ये सिस्टम यदि आपका स्ट्रीमलाइंड है तो आपका जो बायर है वो खरीदेगा आपसे। एग्जाम्पल मैंने आपको रिलायंस कर दिया था, ये एक ऑर्गेनिक एक्सपोर्टर है,
उसको ऑर्गेनिक फूड चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट जो पेस्टिसाइड का है वो शुड बी बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये प्रोसेस आ गया। अब एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक सपोर्ट की बात करते हैं, इनपुट सपोर्ट। उन्होंने बोला था हम ही बीज देंगे आपको, हम मार्केट देंगे आपको। यदि कोई स्किल्ड प्रॉब्लम है, डिजीज आ गई है, ये कुछ आ गया, तो हमारा स्किल्ड मैन पावर आपको सपोर्ट करेगा। यदि कुछ पैसे की जरूरत है तो हम 25% आपको एडवांस दे देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब मशीनरी, बोले मशीनरी कैसे होगा? भाई ग्रेडिंग करना है हमको तो फ्रूट एक साइज की चाहिए ना, तो हमें ग्रेडर चाहिए। शुरू में हम इनिशियली लोकल कोई ग्रेडर का जुगाड़ कर लेंगे, बाद में जैसे ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो आई हैव टू कीप अ ग्रेडर, क्योंकि सबको एक जैसा चीज चाहिए, एक कलर का चाहिए, एक साइज का चाहिए, तो फिर ग्रेडिंग होगी। तो ये सपोर्ट किसको देगा? वो किसान को आपको देना है ना सपोर्ट। बेनिफिट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, क्योंकि सॉरी। फिर पावर सप्लाई, उन्होंने बोला कि अब ये बिजली नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे? आप एक पावर सेट उसको करेंगे, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करेंगे ऑन द बेसिस, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। It's not the farmer is going to benefit, it's you are also benefiting because you are running a business out of it. Supply chain का business है। तो you are not a producer, but you are a system where you are arranging all these things. And then you have a commitment with a company which is quality conscious. ये किसान नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस, वो जो भी है उठा के बेच देता है, इसलिए उसको रेट नहीं मिलता। आपने क्या किया? ग्रेडिंग कर ली, क्वालिटी एश्योरेंस कर ली, तो क्या हो गया कि जिसको आप सप्लाई कर रहे हैं उसको जो ए ग्रेड का चाहिए था ए ग्रेड दे दिए, बी ग्रेड जो है आपने बाजार में खरीद दिए। लॉजिस्टिक बताए मैंने। अब प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? आपने इतना सपोर्ट कर दिया, प्रोड्यूस क्या है उसका? फूड ग्रेन है, एग है, मीट है, चिकन है, FYM है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। ये प्रोड्यूस क्या होने वाला? उस प्रोड्यूस को मार्केट आप लिंकेज दे रहे हैं कि नहीं? उसमें आपका बिजनेस है कि नहीं? आपका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आपने उसको ट्रेडिंग करने के से आपको 5-10% का प्रॉफिट मिल गया, तो यू आर डूइंग बिजनेस आउट ऑफ इट। यही तो रूरल मैनेजमेंट में सिखाया गया है, यही तो एग्रीकल्चर में सिखा रहे हैं। तो आपको जितना बेहतर समझ में है कोई चीज की, उतना तो बाकी लोगों को नहीं। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, प्रोवाइडेड यू गो टू द विलेज। रूरल मैनेजमेंट करने के बाद आप शहर में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन या एग्रीकल्चर का डिग्री करने के बाद अब आप शहर में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कहाँ मिलेगा आपको? नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। डॉक्टर रवीन्द्र पास्तोर हैं, ये जबलपुर में कमिश्नर थे, बाद में ये सेक्रेटरी सीनियर पोजीशन से रिटायर हो गए। वो आज CEO हैं ई फसल, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका इतना बड़ा बेस है, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनपुट बिजनेस में काम करना चाहते हैं या फिर अपना प्रोसेसिंग में काम करना चाह रहे हैं, तो यू कॉल हिम। इनके साथ एक 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 छोटा सा इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लीजिए आप। इनका करीब करीब 500 करोड़ का टर्नओवर है एनुअल। पूरा इनपुट कंपनी से सीधे लेते हैं, और आपको यदि अपने क्षेत्र में एक इनपुट का सप्लाई का दुकान खोलना है तो ही विल सपोर्ट यू। तो रवीन्द्र पास्तोर साहब इज देयर। आपको एग्री बिजनेस एस्टेब्लिश करना है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास एक स्टार्टअप है, मेरे पास एक आइडिया है और मेरे को उसको स्टार्टअप को सपोर्ट चाहिए, तो देन यू अप्रोच डॉक्टर SV नाहरकर, CEO जवाहर रावी, ही इज फ्रॉम JNKVV, ही इज माय सीनियर। तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। तो ये 2 प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं ऐसे लोगों का जो अप्रोचेबल है। Whenever you call them, they will attend your call and they are willing to support. बहुत आपको एंगेज करके रखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और फिर बहुत सारी एरियाज हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। आप कोई भी एक प्रोजेक्ट है उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में देख सकते हैं। आप यदि कंसल्टेंट के रूप में जाना चाहते हैं, यदि आपके पास स्किल सेट है तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, वो गवर्नमेंट को चाहिए होता है, वर्ल्ड बैंक को चाहिए होता है,
और आरबीआई को चाहिए होता है, नीति आयोग को चाहिए होता है। तो वो इम्पैक्ट एनालिसिस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी पेइंग, प्रोवाइडेड यू हैव दैट स्किल सेट। यदि आपके पास वो नहीं है तो यू वोंट बी देयर। और डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, आईटी सोल्यूशन बेस करने के लिए, फिर आपको ट्रेनिंग, सोशल एम्पावरमेंट, इसके लिए आपके पास एक अदर ऐसे बहुत सारे एरिया हैं वेयर यू कैन engage yourself or you can find a place for yourself. Next, please. This is all what I wanted to share with you. Thank you and all the best. And finally, I would thank XIDAS and all the faculty members for giving me an opportunity to discuss. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing valuable information. Thank you so much, sir, for sharing your valuable information with all of us. Now, house is open for the question. You can unmute your mic and ask the question, or even drop a message in the chat box. No questions? Sir, since no one is asking questions, I just wanted to know a little more about some experiments that you have started in the university. Like, in what do you call that? I don't know. But you have purchased big sacks and you put some mud and manure, and then you have planted, different kind of plants. And according to the season, it goes changing. So what do you call that? What is that kind of cultivation? Father, that is a model we have developed. We named it as Jawahar model and we filed a patent for that. So that is a way, opportunity or a technology to double farmers' income. Now what we are doing is, suppose you want to go for an organic farming. So organic farming means that your land has to be certified after 5 years. You get a certification. Now what we are doing is, we have polypropylene bags, ordinary bags, which you get for 18 rupees a bag. You fill it in with light soil and manure and or biofertilizers. So entire thing is organic. Now you plant any vegetables or any plant or that crop. So you are not dependent on tractor. You don't have to plow your field. You don't have to do weeding. You don't have to depend on weather, because usually farmers, what they do is they start their field operations and sowing only after the arrival of monsoon. No, we are not waiting for the monsoon to happen. We are not waiting for the tractor to come to plow our field. We are just prepared bags, and then from half an acre of land, we are harvesting 33 crops at different intervals. In traditional way, what they are doing is they do the sowing operation and then harvesting operation after 6 months, 3-4 months. And when the produce is sold, the money comes after 6 to 7 months. So there is a lean period of 7 months, no cash. With our model, the farmer can get or harvest a crop every 15 days, depending upon the market and depending upon the choice of the crop. So this is again a organic farming system. Like a startup would like to supply organic produce to the market, and then suppose your land is full of fertilizers, so you are not going to produce. Your product will not be organic produce. You get light soil,
get farmyard manure, add biofertilizers, and grow this on the bag. So your product is now organic. You make a video clip, show to the consumer, see, this is how I am making my produce. And this is the produce which you are going to get. And this can start in a small area of a half an acre, or even in your backyard. So this is, so now what you are going to do is, sir, if you are going to be an entrepreneur, all the backyard of farmers, they are not more than half an acre. If you can identify those farm women and practice or promote this Jawahar model in their backyard, NABARD is going to support it because NABARD has adopted Jawahar model and they are going to support it financially. Because the small investment is small, sir. Again, sir, what Amul's MD Sodhi spoke, small farmers, small investments, small retailers. If you go small, sir, you will succeed. The problem is we go for heavy investment, big area, big program. So the chances of success is limited, sir. When you go for small people, small area, you learn more. And even if there is a mistake or a drawback, we have a space for rectifying our mistakes or drawbacks. So you are not at a risk, sir. This is anything more, sir. Thank you, sir. Very good. Thank you very much. So there is one question in the chat box by Alvina ma'am. What is the scope for a self-starter in rural sector? There is a lot of scope provided where you would like to go. See, where you would like to go. The thing is that in an area like Panagar, it is close to city. There, an ecosystem or whatever you would like to start is quite different from what you would like to start in Bareilly. Okay. So now, if you would like to start something new, you have to identify the village. Do a survey. Find out what are the strengths of that village, what is the production base, what are the opportunities. Suppose sometimes what is happening is you have a good resource base, a good production area, but then farmers are not cooperative. So you are going to fail. There is already a system. वो जो मिडिलमैन है उसने सबको पैसा दे कर रखा हुआ है, बोला तेरे को उधार जब चाहिए था, लड़की की शादी थी तब उसने उधार दे दिया, जब किसी ने कोविड में एडमिट था तो उसने पैसा दे दिया. तो नाउ ऑल दिस पीपल हु आर ऑब्लाइज्ड टू हिम, दे आर वर्किंग फॉर हिम. अब वहाँ पे Miss Alvina is going to start an entrepreneurship. So you state. तो अब हमको ऐसा जगह देखना है where I can do something, where the failure, chances of failure is minimum. Risk. For that you need to do a survey of the village or a set of village, and then you have to find out कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है. Start should always be a small start. उनसे बोले यार कि तुम ये जो वैरायटी है, ये पालक की वैरायटी है, ये पालक की वैरायटी 300 रुपए बीज आता है. बोले कि इस बार ऐसा करो, आप पालक तो लगाते हैं तो ये वाला बीज लगा के देखिए आप. उसको क्या किया, उसको आपने 1 किलो पालक का बीज ले लिए, हार्डली 400 kg. हमने क्या किया, पालक का बीज तो 1 किलो मतलब एक टोकरी भर के आ जाता है. आपने क्या किया, वो 4-5 वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको दे दी, बोला आप इसको लगा के देखिए. वो जब आ गया फसल, बोला ऐसा करिए आप, ये सारे चीज हमको बेच दीजिए आप. बाजार में जो है 15 रुपए किलो है, हम आपसे 13 रुपए में ले देंगे और पैसा यही दे रहे हैं आपको. ठीक है, हम आपको गार्डन फ्रेश है, आपको मालूम है इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाला, फंजीसाइड नहीं डाला, तो आपने उठाया, आपने यहाँ से किसी को सप्लाई करने की बात की. जब आपने बात की, आपको मार्जिन कितना मिल रहा है, 2 रुपए का, और सिर्फ आपने 10 किसानों के साथ ही काम किया है. तो योर अर्निंग इज नॉट मोर, बट योर लर्निंग इज मोर. You know how those
some women are behaving, how they are responding to you. और ये पालक लगता कैसे है? You don't know how to grow पालक, मगर क्योंकि बीज दिया है, you have an investment of time and you have an investment of resource, तो हर दूसरे दिन जाओगे पालक जमा की नहीं देखने के लिए, पालक ग्रो हो रही कि नहीं देखने के लिए, पालक में गुड़ाई करती है कि नहीं देखने के लिए, तो क्या होता है धीरे धीरे you also learn about palak cultivation, and then you learn about तो क्या पालक लगाए ना, गांव में कभी जाओगे ना, जब पालक लगाए, कहे भाई ये कौन सा पालक लगाई, बोले वो मैडम ने दिया था, है ना, मैडम ने दिया था। फिर वो चर्चा होती कि मैडम ने जो पालक दिया था उसकी पत्तियां चौड़ी है, बहुत अच्छी है। फिर एक बताएगी ये पालक कहाँ चलेगी, वो मैडम सब खरीद के ले गई, कितने में लेगी, 13 रुपए में लेगी, पैसा यही दे गई, ये लो। नेक्स्ट टाइम जब whenever you go there, बोले जो मैडम कब आएगी, ये सब मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग and the confidence building of the growers over there. Gradually what is happening, आपका प्रोडक्शन बेस बढ़ रहा है, you are learning also, you are learning marketing, you are learning production, you are learning what is called man management, you are also learning contract farming. This is the way how you learn and improve yourself. Gradually जब आपका 1-2 सीजन आपका चला, 400 रुपये खर्च किया था, remember, yours was just 400 rupees. You are learning a lot of things. फिर ये समझ में आएगा, then you will understand. रूरल मैनेजमेंट में ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये क्या चीज थी? तो यू स्टार्ट लर्निंग जब खुद करने लगते हो। बिकॉज अभी तक क्या था, आपके डीन फैकल्टी डॉक्टर ने बात की होगी या डॉक्टर आंचल ने बात की होगी, ये करना है, तो जस्ट पास होने के लिए यू आर डूइंग दैट। ये बोले कि चलो इंटर्नशिप है, उसमें थोड़ा सा मार्क्स मिल जाए, बट नाउ यू हैव इन्वेस्टेड। नाउ when your success or failure comes, you are relating to what you are taught. If you relate what you are taught through your field experience, you will learn more, and then you are going to be a successful entrepreneur. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, there is one more question from one of our participants, Mr. Nitish Kumar. Yes. His question is, what are the scope for veterinarian in rural management for opening of the veterinary shops or hospitals? Who all own a pet? Who all own a pet? Anybody? देखो, you don't have a veterinary private hospital. और जिन लोगों के पास एक पेट है, उनसे पूछिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, and then you don't have a hospital. एक क्लिनिक नहीं है अच्छी जहाँ पे मैं अपनी जानवर का ट्रीटमेंट करा सकूं। सब वेटनरी हॉस्पिटल जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स को मिलते हैं, बट किसी ने अब बोलेंगे मैं तो वेटनरी नहीं हूँ, मैं एक हॉस्पिटल कैसे खोल सकता हूँ? जितने लोग ने यहाँ पे हॉस्पिटल खोल कर रखे हैं, उसमें से कितने लोग डॉक्टर हैं? दे आर मैनेजर्स, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने डॉक्टर्स को रखे हैं, है ना? उनको इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, बैंक ने फाइनेंस करा दी, उन्होंने बिल्डिंग बना दी, और वो बैठे हुए चेयर पे, वो डॉक्टर्स को जो है उनको दिहाड़ी पे रख दी या कॉन्ट्रैक्ट पे रख दी, आप इतना ऑपरेशन करेंगे तो इतना पैसे देंगे। तो क्या इस तरह से हम लोग कर सकते हैं? शहर में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। You don't need to be a technician, you have to be a manager, and this is what XIDAS is teaching. Is that okay? Is that okay, Nitish? Yeah, okay, sir. Good afternoon, sir. So last question from Uma ma'am. What about the eucalyptus cultivation, sir? See, anything which you cultivate, prior to cultivation, prior to selection of a plant or a tree, you have to see where it will be sold.
Have you been in Manupur area or in scheduled area? There is Orient paper mill. They transfer the technology for raising eucalyptus. They supply prunal plants, and they have a development manager who inspects your land and inspects your growth of the plant. And when the time comes, they'll purchase the timbers from you. They'll do all the cutting and all, cleaning and all, and they'll take the plant. So here, when you grow eucalyptus, the demand is not for timber. The demand is for poles. So you have to harvest when the tree has grown to a pole size. तो उनको बल्ली चाहिए, वहाँ उनको पल्प चाहिए, उनको बड़े बड़े पेड़ मिल जाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ काटनेंगे तो यहाँ पे ढुलाई बहुत महंगी पड़ेगी। तो आपको क्या है, यहाँ पे पोल की जरूरत है, बल्लियों की जरूरत बहुत होगी। तो यहाँ पे देखिए यूकेलिप्टस है, सेम चाहिए। वहाँ फैक्ट्री है तो वहाँ पे पल्प की जरूरत है, बड़े बड़े पेड़ कट जाएंगे। यहाँ पोल की जरूरत है, तो पोल जो खरीदने वाला है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। मीन जो बायर है उसकी नीड अलग है, तो ग्रोवर को हमेशा बायर या मार्केट के हिसाब से इवन क्रॉप को भी चूज करते हैं, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। Sir, is it cost effective here? Well, there is an example on the way to Panagar. There's a farmer, Chaube. He has grown reluctantly eucalyptus. पहले से जब हम लोगों ने बात की थी यूकेलिप्टस लगाने के लिए, सब लोगों को बोला था पानी की हिस्सा है, वो करता है, जमीन खराब करता है। But now he has earned a lot, and then he is promoting other people here who लगा ले, मैं खरीद लूँगा तुमसे। ऐसा सिस्टम हो गया। Thank you, sir. Thank you. You're welcome, ma'am. Thank you so much, sir, for addressing us and giving a very good presentable presentation, sir. Thank you so much, sir. You're welcome. Before moving ahead, it is mandatory for everyone to fill the feedback form of this webinar. The link of the form will be attached in the chat box to receive the e-certificate, and the recording of this webinar is available on the YouTube. So if you want to share with your friends, you can share with it. No duty is more urgent than that of returning of thanks. So for this, I would like to call Father Vinod Topo SJ, Assistant Director XIDAS, for giving the vote of thanks. Welcome, Father. Dear all, present online and offline, very good afternoon. Our former director, Dr. S.L. Raj, used to say, money is there, you should know how to find out. Similarly, job is there, you should know how to find out. As Dr. Moni said, either be job hunter or job creator. Opportunities are there, and we know India is a country of villages and a lot of things to be done in the villages. So opportunities are there. Only what we need is the mind setup. Before I proceed for vote of thanks, I would like to say a few things. India is an agricultural country. Agriculture in India is livelihood for a majority of the population and can never be underestimated. Agriculture and its allied activities act as main source of livelihood for more than 80% population of rural India. It provides employment to approximately 52% of labor. Its contribution to gross domestic product is between 14 to 15%. Indian agriculture has progressed rapidly in recent years and ranks now as the second largest food producer in the world, as Dr. Moni Thomas also said. The country's agricultural production is far above that of the US,
which once supplied food grains to India, to tide over our domestic food shortage. Unknown to many, India's international trade in agricultural products fetches higher earnings for the country than trade in services or manufacturing. Increasing population, increasing average income, and globalization effects in India will increase demand for quantity, quality, and nutritious food and variety of food. Therefore, pressure on decreasing available cultivable land to produce more quantity, variety, and quality of food will keep on increasing. Future of agriculture is a very important question for the planners and all other stakeholders. Government and other organizations are trying to address the key challenges of agriculture in India, including small holdings of farmers, primary and secondary processing, supply chain, infrastructure supporting the efficient use of resources and marketing, reducing and intermediaries in the market. There is a need for work on cost-effective technologies with environmental protection and on conserving our natural resources. Advantageous weather and soil conditions, high demand for food, untapped opportunities, various fiscal incentives given by the government for inputs, production infrastructure, availability of cheap credit facilities, and for marketing and export promotion are attracting many individuals, big companies, startups, and entrepreneurial ventures to do a lot of investments on innovations, inventions, research, and development, and on other aspects of business. The efforts are being done to convert all the challenges in agriculture into opportunities, and this process is the future of agriculture. Having said this, I thank Dr. Moni Thomas for being with us and sharing his valuable insights and thoughts and making us aware of many things, many informations and opportunities. On behalf of the institution, I thank Dr. Moni Thomas. Thank you, sir. Thanks to Father Director for your constant support and encouragement to organize such webinar. Thanks to organizing committee led by Dr. Zogendra Pathak for creating such a good platform. Thanks to all who participated in this webinar online and offline. Thanks to IT department for making things smooth and convenient. Thanks to admin department for your full support for all the arrangements. And all my dear students, thank you so much for your active involvement. Thanks to Ankit for anchoring. Thanks one and all, and God bless you. Thank you also. Thank you, Thomas, once again. See you sometime. Anytime. Thanks. I request everybody to please kindly switch on your camera for having a group photograph. All the participants are requested to please switch on your camera for a group photograph. Yes, Anshul. At the count of three, 3, 2, 1. Thank you so much. Ends are not bad things. They just mean that something else is about to begin. And there are many things that don't really end. Anyway, they just begin again in a new way. Ends are not bad, and many ends aren't really an ending. Something's new, something's never ending. So with this, we come to the end of this webinar. I would like to thank everybody for attending this webinar. Thank you all for joining and being a lovely audience. Stay safe, stay healthy, and take care. Thank you so much, everyone. Thank you. Have a good day. Thank you.
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome. Thank you.